Put on this question. It's a building of height h, and from its top, a projectile is fired with initial velocity u. From its roof, somebody has projected projectile with initial speed u. And then question says, this projectile hits the inclined plane perpendicularly. This angle is 90. We need to find v with what velocity it hits the incline. We also need to find t, after what time this projectile hits the incline. This inclined plane makes an angle of theta with horizontal. This is something which is given. Note down the question. Draw the figure first. A projectile is fired from the top of a building, horizontally with speed u. It hits an incline. Perpendicularly with velocity v. After time t. Find out v and t. Find out v and t. Let's see how do you answer this. भाई हर चीज का आंसर 2u sin थीटा अपॉन g नहीं होता है. आप लोगों को कई बार बता दिया गया है, उसके बावजूद आप हमेशा एक ही आंसर देते हैं 2u sin upon g, 2u sin upon g. That time of flight is used only for ground to ground projection. At least I can expect this much from you guys,
that again and again I've been telling you this thing कि कब 2u sin theta upon g यूज करते हैं. आपके लिए हिंट ये है, परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है ये. अगर ये प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, then what does it mean? Why did I give you this information? Second hint, in projectile motion we always resolve all the vectors along x-axis and along y-axis. क्या है ऐसी चीज जो रिजॉल्व नहीं है? थिंक अबाउट इट. Right at this point, question says that projectile hits the incline perpendicularly with velocity v. This angle is 90. So this is point A and this is point B. तो हमने यहाँ पर ये point B को शो किया हुआ. And then I asked you to resolve things which are not along the x-axis and y-axis. Velocity क्वेश्चन में दी हुई है, हॉरिजॉन्टल है. इस v को रिजॉल्व करना है. इस v को रिजॉल्व करने के लिए आपने एक x एक्सिस और एक y एक्सिस इस तरह से ड्रॉ की हुई है. अब आप वेक्टर को तब रिजॉल्व कर सकते हो जब आपको एंगल्स का आइडिया हो किसी भी एक एक्सिस से. ये थीटा है and question says that projectile hits the incline. Suppose this is the incline, then question says that projectile hits the incline perpendicularly like this. अगर इन दोनों में से कोई भी एंगल मालूम पड़ जाए तो हम इस v को रिजॉल्व कर पाएंगे. कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे देखना. This is theta. This is theta. You can see that this is 90. It's a vertical line and therefore this angle is 90 minus theta. Theta 90 minus theta. Now question says that this hit, it's a perpendicular hit. तो अगर ये 90 minus theta है तो hopefully आपको दिख रहा होगा that this angle, this is theta. v का वर्टिकल के साथ जो एंगल बनकर आया वो कितना है? थीटा. नाउ अगर आपको किसी वेक्टर का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से एंगल पता हो तो हम क्या करते हैं, v
this vertical component जिसके साथ एंगल होगा दैट इज कॉस। कुछ लोग क्या अपने दिमाग में फिट करके बैठते हैं कि हॉरिजॉन्टल इज कॉस। नो, जिसके साथ एंगल होता है दैट कंपोनेंट इज व्हाट कॉस। इस v का वर्टिकल के साथ ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है दिस इज v cos थीटा। इस v का अगर ये कंपोनेंट cos है तो दूसरा कंपोनेंट this will be v sin theta. Note down this. अब इसके बाद इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं दम बची हुई है। I'll take the next hint. हम लोगों ने एक स्टेटमेंट सीखा हुआ है that in projectile motion horizontal component of velocity does not change. Again write down the statement. शायद फोर्थ या फिफ्थ टाइम्स इस चीज को अपन डेवलप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगेन नोट डाउन दिस पॉइंट दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal component of velocity does not change. अब भाई इस हिंट के बाद तो क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। लेकिन कितने लोग v फाइंड कर सकते हैं विद दिस हिंट? बड़ी बुरी हालत है भाई, इतनी हिंट देने के बाद क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हो आप। आपसे बोला मैंने दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट चेंज। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है मतलब व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियली? u, that's u, horizontal projection. And what is horizontal component when it hits the incline? v sin theta. v sin theta. ये स्टार्टिंग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हिट करते वक्त है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। दैट मींस u इज इक्वल टू व्हाट? v sin थीटा। v फाइंड करना था, कैलकुलेट हो गया है v। u अपॉन sin थीटा, दैट इज u
cosec theta. That's the value of V. V. Note down this. Now find out T. After what time this projectile hits the incline? किस तरह से आप सोचेंगे? टाइम के लिए आपको क्या सोचना है, इधर देखना. V equals to U plus AT. एक तो ये इक्वेशन हेल्प कर सकती है. दूसरी है S equals to UT plus half AT square. सेकेंड इक्वेशन ये है. V equals to U plus AT, S equals to UT plus half AT square. आपको सोचना है इनमें से कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट और सेकेंड which will help you. Equation number 1 or equation number 2, which equation will help you in finding T? Write down 1 or 2 in the comment box. Let me see कि आप कुछ सोच भी पाते हैं या नहीं. What is that equation which will help us in finding T in this question? If you think it's the first equation, then write down 1 in the comment box. If you think second equation will help you, then write down 2 in the comment box. Now, if you talk about S equals to UT plus half AT square, those who said that second equation will help us in finding T. If somebody uses S equals to UT plus half AT square, then you must have the information of displacement. But we have no idea of displacement from this point to this point. This H is vertical height. H is vertical height. Had it been a situation like this, if somebody would have asked you that projectile is going to reach at this position, from this to this, we have the information of vertical displacement. लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये पोर्शन है ही नहीं. हम बात कर रहे हैं from A to B. We have no idea of displacement, and therefore you should not write this equation. Now,
इसका मतलब कौन सा इक्वेशन यूज होगा, u प्लस ए टी। और फिर से आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, I should use this equation along the x-axis or y-axis. If you think that I should write the equation along x-axis, then write down x. If you think that I should use the equation along y-axis, then write down y. And many are still not able to answer a simple question like this. दुनिया का कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो ax, horizontal acceleration is what? 0. Vertical acceleration ay is minus of g. If somebody tries to use ax or he writes this equation along x-axis, तो फिर ax क्या हो जाएगा? 0. 0 multiplied by t क्या हो जाएगा? खत्म। x डायरेक्शन का स्टेटमेंट हम यूज कर चुके हैं। In projectile motion, horizontal component of velocity never ever changes. That's this. हमें इस equation को, therefore you must write this equation along y-axis. Vy, uy, ay and t. Now write down this equation Vy equals to uy plus ayt, and let's see who gets me time first. अपने को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दैट ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है आपने, horizontal throw means ux is u and uy is 0. uy चाहिए अपने को। What's the value of uy? 0. जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा, बार बार चीजें एक ही रिपीट होती रहती हैं। अगर दिस इज यू, इस थीटा से मतलब नहीं है, मैं प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूं। अगर ये थीटा होता था तो ये कंपोनेंट क्या कहलाता है? u cos, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या कहलाता है अपना? u sin। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए थीटा क्या हो जाएगा? 0. For horizontal projection, theta is what? 0, and therefore ux becomes u cos 0. Cos 0 is 1, that gives you u. Whereas vertical component uy, u sin theta, theta is 0, sin 0 is what? 0. और इसी चीज को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला है मैंने, कि अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल है तो उसका वर्टिकल इफेक्ट क्या होता है? 0।
अगर कोई वेक्टर वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट क्या होता है? 0। इनफैक्ट किसी भी वेक्टर का अपने से 90 पर, वेक्टर इधर है अपने से 90 पर, वेक्टर इधर है अपने से 90 पर, जो भी इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? 0। अपने क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कहां थ्रो किया है हमने? हॉरिजॉन्टली, इसलिए यू वाई क्या हो जाएगा? 0। जैसे आपका यू वाई 0 हुआ, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जो अपना यू वाई है कमिंग 0, ए वाई माइनस ऑफ जी, टी फाइंड करना है। व्हाट इज वी वाई? ये सिचुएशन, कहां से कहां का टाइम निकालना है? ए टू बी, बी पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। v हमने कैलकुलेट किया हुआ है u अपॉन साइन, दैट्स वैल्यू ऑफ v, u अपॉन साइन, u अपॉन साइन थीटा multiplied by cos theta. This is coming u cot theta, u cot theta, vy u cot थीटा। लेकिन गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? व्हाट इज वी वाई? वर्टिकल वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब आपको क्या काउंट करना पड़ेगा? डायरेक्शनल पार्ट। हमारी वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स के लिए इस वी वाई का नेगेटिव साइन यूज करना होगा। नेगेटिव एंड नेगेटिव कैंसल्ड, T is coming u cot theta upon g. That's time. U cot theta divided by g. Note down this. Now those who are looking for IIT advanced type of examinations, remember I said IIT advanced केवल उनके लिए। If you are looking for school level examination, if you are looking for JEE main और NEET, उस केस में नहीं। If you are looking for IIT advanced type of examination, then इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आप नोट कर सकते हैं। Find out minimum h, find out minimum h so that a perpendicular hit is possible. Find out minimum h so that
a perpendicular hit is possible. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हाइट से थ्रो कर दें और ये परपेंडिकुलरली हिट कर जाए. So you need to find h, minimum value of h in terms of u, theta, g, all these things, so that a perpendicular hit is possible. Now write down laws of motion. इस टू डायमेंशनल मोशन में सर्कुलर मोशन भी आता है, लेकिन सर्कुलर मोशन को समझने के लिए अपने को फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. एंड देयरफॉर we'll first go through this laws of motion and then we'll come back for circular motion. नॉर्मली स्कूल लेवल पर सर्कुलर मोशन को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके समझाते हैं, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी ओनली. कुछ हिस्सा उन्होंने प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशनल प्लेन में दिया हुआ है, कुछ हिस्सा कहीं और दिया हुआ है. तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन in a better way if you are familiar with concepts of force, tension force, normal reaction force, these sorts of things. And therefore we'll skip circular motion as of now and we'll come back when we are comfortable with these terms. Write down laws of motion. लॉज ऑफ मोशन में भी स्टार्टिंग का पार्ट जो एलिमेंट्री पार्ट है, दिस इज समथिंग विच एवरीबॉडी इज फैमिलियर विद. फिर भी laws of motion. First law, write down first law. Which is called law of inertia. Write down law of inertia. First law, which is law of inertia. Now we'll break this law of inertia in two parts. This law of inertia we'll break it in two parts. Part A and part B. Part A is inertia of rest. And part B is inertia of motion. अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा. हालांकि this part A is nothing but part B. If you say that there is no motion, velocity is zero, यहाँ आ जाएंगे. फिर भी जिस तरह से चीजें डेवलप की जाती हैं for that purpose, write down like this. First law is law of inertia, and then write down with this first part, which is inertia of rest. Write down the statement. If an object is at rest, if an object is at rest, it remains at rest. It remains at rest unless
an external force is applied on it. Unless an external force is applied on it. जो एक्सटर्नल है उसको बाद में समझेंगे अच्छे से. अभी के लिए just remember that if an object is at rest, then it remains at rest unless an external force is applied on it. Write down second part, B. Inertia of motion. Inertia of motion. If an object is moving, then it keeps on moving, with same magnitude, and direction, unless an external force is applied on it. Unless an external force is applied on it. I hope you can understand that this motion part. If you say that an object is moving with zero velocity, immediately the second part becomes what? First part. As for the sake of argument, we say that inertia of rest and inertia of what? Motion. So what basically inertia is? Inertia means, I hope you know from 9th and 10th, that tendency to oppose any change in the present behavior. Present behavior means if something is moving, then it wants to retain this present behavior of motion. If something is at rest, then it wants to maintain this motion of rest, or this condition of rest, or the behavior of rest. That's called what? Inertia. In fact, write down meaning of inertia again. Write down meaning of inertia. Tendency to oppose any change in the present behavior regarding its motion is called inertia. It's called inertia. Sir, please repeat what? Tendency to oppose any change in the present behavior of an object regarding its motion is called inertia. Now write down second law. सेकेंड लॉ के लिए छोटी सी एक दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, and I hope everybody already knows these things. First of all, write down second law, and then in second law write down linear momentum.
P. Zyada better version. P as a vector sign. Write down the statement. Product of mass and velocity. Product of mass and velocity is called linear momentum. Product of mass and velocity is called linear momentum. Linear का मतलब है अपना straight line motion. जब अपन circular motion and rotational motion करेंगे तो हम देखेंगे there is one more thing which is called angular. When things rotate, we call them angular. When you find that object is only in translate free motion, moving straight, then we define linear momentum. The product of mass and velocity is called linear momentum. Linear momentum is a vector quantity. Linear momentum is a vector quantity and its direction is in the direction of साफ साफ सामने दिख रहा है मास स्केलर होता है वेलोसिटी वेक्टर होती है दो वेक्टर्स को आप इक्वेट कर रहे हो what is the direction of linear momentum same as that of v so linear momentum is a vector and its direction is in the direction of velocity. Its unit is kg into meter upon second. Its unit is kg into meter upon second. Get me its dimensional formula. Write down dimensional formula in the comment box in 5 seconds. What is the dimensional formula? बहुत सारे लोग बहुत स्लो हैं they don't respond at all. Such an easy question that at least you should try these things. Dimensional formula is यानी केवल इसलिए लोग m को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. M is mass is not meter is length. Its dimensional formula is m v l upon t to the power minus 1 inside the square brackets. अभी थोड़ी देर बाद ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अपने को क्यों जरूरत पड़ती है m into v की क्यों हम केवल v से काम नहीं चला लेते why do we need m together with v and the whole thing combined form is called p ऐसा क्यों करते हैं थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा अभी for the time being just simply write down this and now write down the second law. Write down the second law. When a force is applied on an object,
it changes its linear momentum. When a force is applied on an object, it changes its linear momentum. Force, or write them like this, applied force is directly proportional to rate of change of linear momentum. Applied force is directly proportional to rate of change of linear momentum. इसी चीज का rate of change कैसे define करते हो आप? d by dt. What Newton found is that when you apply some force, that force changes linear momentum. Logical है. Suppose आप object straight line में move कर रहा है, बाद में देखेंगे it has nothing to do with straight line. कहीं भी move करे, straight इधर उधर कहीं भी. For the time being, अभी के लिए मान के चलो straight line में move कर रहा है. And if you apply some force, definitely that force will change velocity, and that will change what? Linear momentum. समझने के लिए आसान रहेगा. What Newton found कि जितना अपन ने force लगाया है, that force is not not change in linear momentum. That force is not equal to change in linear momentum. That force is equal to rate of change of linear momentum. Now, everybody knows that when we remove this proportionality sign, we use a constant. In this case, that constant is 1. Your force becomes dP divided by dt. Force is dP divided by dt. Because proportionality constant is 1. अब इस पार्ट को इसी के साथ इस तरह से लिखा आपने d अपॉन dt. बोर्ड पर देखना भाई. What is P? M into V. M multiplied by V. So what is F coming? D upon dt, M into V. Now, if you can type, then I want to see that how do you differentiate dmv by dt. If it's possible for you, and बहुत difficult चीज नहीं है, आप हल्का फुल्का टाइप करके जरा दिखाइए. Let's see how many of you can differentiate this term d of mv divided by dt. Let's see if you can. Well, that's what I expected from you. मुझे पता था आप यही लिखेंगे, इसीलिए पूछा भी था. And I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर ने पूछा, हमने तुरंत आंसर भी दे दिया. इसका मतलब गलत आंसर ही दिया होगा. क्या गलत आपने किया है वो यहां देखना. Let me give you a hint. इससे आपको आइडिया लगे कि हाँ आपने कुछ गलत किया है. Now, how many of you remember this? Y equals to U into V. Product rule. First function multiplied by second function. And we used to write dy upon dx. U, first function,
differentiation of second plus second function differentiation of first. Write down yes in the comment box if you remember this formula. If you remember this formula, then write down yes in the comment box and then differentiate that part. जिन लोगों ने इसके पहले नहीं देखा हुआ है, y is equal to u into v. This is called product of two functions. First function is u, second function is v. जब आप इस चीज को x के रिस्पेक्ट में या किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो क्या करते हो? राइट डाउन द फर्स्ट फंक्शन. जो सेकंड है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो. तो v का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dv अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन लिखो v. फर्स्ट जो है u, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में du अपॉन dx. यहां पर डिफरेंशिएट, कोई आपसे बोले y को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये होता है dy अपॉन dx. कोई आपसे बोले w को डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये होता है dw बाई dx. कोई आपसे बोले z को डिफरेंशिएट कर दो z को t के रिस्पेक्ट में, तो वो होगा dz अपॉन dt. इतना आसान होता है डिफरेंशिएशन का ये प्रेजेंटेशन. Now, those who have no idea of this, wrote down this, and then with the help of this, get me the differentiation of f equals to d of mv divided by dt. देखना भाई, f फर्स्ट फंक्शन m, फर्स्ट फंक्शन है m, सेकंड कौन है v, ये आएगा आपका dv डिवाइडेड बाय dt. फॉर्मूला अपने x के रिस्पेक्ट में सीखा है, लेकिन ये t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है. m डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t is dv by dt प्लस सेकंड फंक्शन v डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट m dm divided by dt. That's your f. m times d by dt plus v times dm by dt. अभी क्या बना यहां पर, इस चीज को जरा समझना. Well, the first part of this differentiation, everybody knew this thing, and they are also written this part. dv upon dt is called what? Acceleration plus v times dm by dt. देखना इधर, what is dv by dt? dv by dt is rate of change of velocity. dv by dt, rate of change of velocity. That is called what? Acceleration. What is dm by dt? Rate of change of mass. Write down this. dm by dt is called rate of change of mass. dm by dt is called rate of change of mass. Rate of change of mass
if mass of an object is constant, if mass of an object is constant, if mass of an object is constant, then dm by dt is what? Zero. किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो. dm by dt का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास. लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि मास आपका क्या बना हुआ है? कांस्टेंट. dm by dt क्या बनेगा? जीरो. एंड देयरफॉर f is what? m into a. ये जो dm by dt है, ये क्या बन गया अपना? जीरो. अब इसी के नीचे कंटिन्यू करना. dm by dt क्या हो गया? Zero, and therefore f becomes what? M into a. M into a. Which means what? Look at this important information. लोग बोलते हैं what is second law? F equals to ma. No. Second law is not F equals to ma. What is second law? Second law is F equals to dp by dt. F equals to dp by dt. Now this dp by dt is fundamentally this m into a plus v into dm by dt. When mass is constant, the second term, it becomes zero. That gives you F equals to ma. Which means in a situation where mass is not a constant, we cannot use F equals to ma. What are those situations where mass is not constant? Now, visualize this information. Look here. Suppose we have a bucket filled with water. Bucket hai, and that bucket is filled with water, and somebody is pulling this bucket. As you are pulling this bucket, you can use F equals to ma because mass of this bucket is constant. But now imagine this second scenario. Somebody made a hole, a tiny hole at the bottom of the bucket, and through that tiny hole, water is leaking out continuously. तो जो छेद है उससे पानी बाहर जा रहा है. So water leaks out, and if somebody is pulling that bucket, and if he still applies F equals to ma, then I hope you know it will be wrong. Because as you pull this bucket, water leaks out, mass of the whole bucket continuously changes, and therefore you will need to take care of dm by dt. Which means Newton's second law in this form is valid only if mass is constant. Write down this as a statement. F equals to ma. F equals to ma should be used F equals to ma should be used only if mass of an object is constant. F equals to ma should be used only if mass of an object is constant. In a situation where mass is continuously changing, we must use
F equals to dP by dt. In a situation where mass is continuously changing, we must use F equals to dP by dt. अब इससे कंफ्यूज मत होना, मास कांस्टेंट हो या नहीं हो, ये तो हमेशा ही है, चाहे कांस्टेंट है या नहीं, ये तो फंडामेंटल पार्ट है। लेकिन अगर मास कांस्टेंट है तो ये चीज सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाती है, Na। तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि मास कांस्टेंट है भाई, क्या यूज कर लो, F इक्वल्स टू Na। लेकिन अगर मास चेंज हो रहा है, जो बकेट वाला एग्जांपल दिया, उस केस में इसको नोट कर लें, बकेट वाले एग्जांपल को नोट कर लें। इफ somebody is pulling a bucket filled with water, if somebody is pulling a bucket filled with water, then he can use F equals to Ma. Then he can use F equals to Ma as well as F equals to dP by dt, as well as F equals to dP by dt. But if there is a hole in the bucket, and through that hole water leaks out, then mass of the bucket is no longer a constant. Then mass of the bucket is no longer a constant, and therefore we cannot use F equals to Ma. We cannot use F equals to Ma. We should use F equals to dP by dt. We should use F equals to dP by dt. इन शॉर्ट अपन क्या बोलते हैं, जब भी वेरिएबल मास टाइप की कहानी होगी, वेरिएबल मास, the mass is continuously changing, तो उस सिचुएशन में वेरिएबल मास वाले केस में do not use F equals to Ma. Always use F equals to dP by dt. You can mention this, that for variable mass, इस तरह से लिख लेना, variable mass F equals to Ma. No. For variable mass F equals to dP by dt. Yes, we can. अगर हम बात करें रॉकेट propulsion, when you fire a rocket, in case of a rocket propulsion, can you use F equals to Ma? Write down yes or no in the comment box. When a rocket is fired, it goes up because of action and reaction forces, which is Newton's third law. So can we use F equals to Ma for a rocket which is fired?
How can you say yes? How can you say yes? Write down this. When a rocket is fired, inside the bracket, rocket propulsion. Inside the bracket, rocket propulsion. Mass of rocket continuously decreases. Mass of rocket continuously decreases फ्यूल लगातार बाहर निकल रहा है, फ्यूल बाहर निकल रहा है तो मास लगातार क्या हो रहा होगा उसका डिक्रीज. In case of rocket propulsion, mass of rocket continuously decreases and therefore we should not use F equals to ma. We should not use F equals to ma. बाद में देखेंगे इस चीज को अपन रॉकेट प्रोपल्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे अपन. अभी राइट डाउन थर्ड लॉ. Write down third law. Now, third law is something which everybody knows. For every action, somebody is saying that in case of car and bike, when they move, petrol continuously is consumed and therefore mass of car and bike is continuously changing. Definitely, your mass of vehicle is continuously changing and therefore theoretically you should not use F equals to ma. But that loss of petrol as compared to the whole mass of the car is almost negligible, and therefore you will find that in examples when car is being pushed or bike is being pulled or pushed, you can always use F equals to ma. बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है वहाँ पर. लेकिन जब आप रॉकेट फायर करते हो तो उस केस में जितना फ्यूल बाहर निकल रहा है, that loss is very much as compared to the mass. I mean, it's not negligible, not very much, it's not negligible. And therefore, you should never use F equals to ma. I hope clear ho gayi hogi kahani, huh? Write down Newton's third law. For every action, there is an equal and opposite reaction. For every action, there exists an equal and opposite reaction. For every action, there exists an equal and opposite reaction. We'll complete the sentence, but before that, let me ask you. The sentence complete नहीं हुआ है, अभी आगे बढ़ेंगे इसमें. But before that, let me ask you, if you say that for every action there is an equal and opposite reaction. So if you have a force due east, then third law says at the same time you have a force which is due west. If you have a force due east and equal strength force is also acting due west, तो अपने को वेक्टर एनालिसिस से पता है कि यार बॉडी पर नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो. Net force is zero, then how can this body move? Is there anyone who can clear this confusion? If action and reaction are equal and opposite, then net force should become zero. And if net force is zero,
then nothing in this world should move. And it should be applied in different bodies according to condition of person. बहुत सही, good. Write down this, continue the statement. For every action there is an equal and opposite reaction, but action and reaction forces act on different bodies. But action and reaction forces act on different bodies. क्या मतलब है देखना है इस चीज का? भाई अर्थ is being pulled by sun. Earth is being pulled by sun. But at the same time, sun is also being pulled by what? Earth. But this gravitational force between earth and sun is acting on what? Action, if you say, is on earth, then its reaction is on what? Sun. So the action and reaction forces, they are always acting on different bodies. एक ही body पर act नहीं करेंगे. If you wish, you can show it like this. If there are two random bodies, body A and body B, the body A is being pulled in this direction, and body B is being pulled in this direction. This is F, this is also F. अगर इस फोर्स को हमने एक्शन बोल दिया तो ये वाला जो F है ये अपना क्या बन जाएगा? रिएक्शन फोर्स. It's like this. Two different bodies. जो मंडे आपके पास लेक्चर आएगा उसमें आपको इस एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड चीजें और मिलेंगी. क्या होता है बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट. For the time being, remember that Newton's third law says that action and reaction forces, they act on different bodies. लोगों को क्या लगता है एक ही बॉडी पर एक्शन आ गई, एक्शन पीछे नेट क्या हो गया? कैंसिल. वी कैन कैंसिल दिस. लेकिन जब कैंसिल करेंगे तो कौन सी चीज मूव नहीं करेगी? शायद सुना हो, नहीं सुना है परेशान मत होना, कुछ दिनों बाद क्लियर हो जाएगा. If somebody says that action cancels the reaction, you can do that. लेकिन उस केस में एक चीज है जो मूव नहीं करेगी. Is there anyone who already knows this thing in advance? कि भैया कौन सी चीज है जो मूव नहीं करेगी अगर हम एक्शन और रिएक्शन को कैंसिल कर दें? अगर नहीं सुना है याद रखना, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. बाद में देखेंगे. ए और बी, अगर कोई आपसे बोलता कि नहीं एक्शन को रिएक्शन से कैंसिल करा दो, ठीक है हो गई. ए और बी दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं करेगा. ए मूव करेगा, बी मूव करेगा, लेकिन दोनों का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा. अगर आपको आइडिया नहीं है सेंटर ऑफ मास का, परेशान मत होना, बाद में देखेंगे. एट दिस स्टेज A is going to move because of action force, B is going to move because of reaction force. और ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको एक्शन बोलना है. अगर ये रिएक्शन है तो फिर ये एक्शन. Both action and reaction, they act simultaneously. Write down this also. Both action and reaction forces act simultaneously. ऐसा कुछ नहीं है कि ए पहले फोर्स लगाएगा बी पर और उसके 2 घंटे बाद बी लगाएगा. नहीं, these things happen what? Simultaneously. Now, see थर्ड लॉ को बोलने का एक और तरीका है.
Write down that second way of representing third law. Next line or next para. In nature, isolated force. In nature, isolated force are not possible. Isolated means a single force. That's not possible. Forces are always present in the form of a couple. Forces are always present in the form of a couple. मीन आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक सिंगल फोर्स है, an isolated force. No, you will not see it. Forces are always present as a couple. एक एक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन. आपको दिख नहीं रहा वो बात अलग है, आपको दिखा नहीं वो बात अलग है, but that force will be there. कहीं ना कहीं होगा, आपको नहीं दिखा वो आपकी टेंशन, लेकिन it is present somewhere. For example, look at this. If I drop this marker is going down. So this is Earth. If I drop this marker, then marker is coming down because of force F1. अर्थ ने इस मार्कर पर फोर्स लगाया F1 डाउनवर्ड्स. ये मार्कर भी इस अर्थ पर फोर्स लगाएगा. छोटा है मार्कर, बहुत छोटा है, लेकिन फोर्स जरूर लगाएगा. अर्थ ने इस मार्कर पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया नीचे, इस मार्कर ने अर्थ पर लगा दिया ऊपर. Which one is larger force, F1 और F2? जो भी लार्ज फोर्स है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना. Which one is the larger force, F1 और F2? F1 अर्थ ने लगाया है मार्कर पर और F2 मार्कर ने लगाया है अर्थ पर. Which force is the larger force? बहुत सही, यही उम्मीद थी. ज्यादातर लोगों ने बोला F1, ज्यादातर लोगों ने क्या बोला, F1. सामने लिखा हुआ है FF. That's what happens. कि लोगों की आंखें और दिमाग इतने बंद होते हैं कि सर सामने बोल रहे हैं that action and reaction they are equal in magnitudes. अर्थ ने इस मार्कर पर लगाया F1, तो मार्कर भी अर्थ पर क्या लगाएगा, same magnitude. And remember, F1 therefore is equal to F2. ये important part है. Draw this figure. ये अपना मार्कर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, doesn't matter वो क्या है. अगर ये अर्थ है और इस मार्कर की जगह एक इलेक्ट्रॉन ले लें आप, छोटा सा इलेक्ट्रॉन, टाइनी, तो अर्थ ने इलेक्ट्रॉन पर लगाया, इलेक्ट्रॉन ने अर्थ पर लगाया. F1 equals to F2. दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम. लास्ट चीज आज के लिए, लास्ट चीज. Which part is correct? The question in this category can be asked in this form. Option A, F1 equals to F2. Option B, F1 equals to F2. Option C, F1 equals to minus of F2. Put down these three options. Now tell me which of these three options are correct. A, B and C. आप कंप्लीट आंसर नहीं दे रहे हैं अभी भी,
almost everyone has said that this is correct. Well, this is definitely correct. This is wrong, but this is also correct. Without an arrow, you're dealing with what? Magnitude. A option. When you see that they have not shown vector symbol, at the same time in some different option they have shown that vector symbol, इसका मतलब वो लोग मैग्नीट्यूड की बात भी कर रहे हैं और डायरेक्शन की. A option says एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम. B ऑप्शन says मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी नहीं. रॉन्ग. C ऑप्शन says मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल मीन सेम है. नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो भी F2 होगा F1 उसके ऑपोजिट होगा. That's the vector meaning. What are the correct options? Correct options are what? A and C. Note down this and जा सकते हैं. Thank you very much.